Hello and very good morning, students of class 6D. I hope you all are well. My dear students, yesterday I was start the first chapter on in your computer book, and the name of the chapter was Computational Thinking. My dear student, I was share you the recorded video, and I also share you one animated video as well. So, my dear students, I am just continue the chapter number 1, and I just want to explain you few more concepts of computational thinking. So my dear students, you just watch the video, and after the video I will going to ask you questions. You just answer me, and if you give the right answer, that means you have understand the chapter very well. So my dear students, in chapter number 1, computational thinking, computational thinking. Computational thinking, we need to understand few of the concepts. The first concept is, what is computational thinking? My dear student, I was told you earlier, my dear student, I was told you earlier that we have to decompose, we have to divide the problem into small tasks. What is computational thinking? What is computational thinking? We need to answer that. Computational thinking is a process of dividing, is the process to divide a big problem into small parts. So we should do some, we should do some technique. We have to follow, we should follow some technique to solve the problem. माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग किसी बड़ी प्रॉब्लम को स्मॉल पार्ट में तोड़ लेते हैं. सो इट इज अ टेक्निक, ओके, जिसमें कुछ स्टेप्स होते हैं. तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, कुछ स्टेप्स होते हैं इनको हमें फॉलो करना पड़ता है. तो कहाँ कहाँ पर कंप्यूटेशनल थिंकिंग का यूज होता है? वी यूज कंप्यूटेशनल थिंकिंग, वी कैन यूज कंप्यूटेशनल थिंकिंग not only in computer, but also every aspect of life. My dear student, हम लोग लाइफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग का यूज ना केवल कंप्यूटर साइंस बल्कि सभी चीजों में इसका यूज कर सकते हैं. चाहे लाइफ से, डेली लाइफ से जुड़ी प्रॉब्लम हो, चाहे मैथ से जुड़ी प्रॉब्लम हो, चाहे साइंस से जुड़ी प्रॉब्लम हो, हम किसी भी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं और हम अपनी प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. आई जस्ट ट्राई टू शो यू विद द डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन. सपोज दिस इज अ बिग प्रॉब्लम. Suppose this is a big problem. Problem might be like this. This is a big problem. Big problem.
we have to divide this problem into small parts. We can divide this problem into small parts. So what we have to do now? We have to divide this problem into small parts. Okay. We have to divide this problem into small parts. This is part 1, part 2, part 3, part 4. So we need to divide the problem into small parts. Let's divide problem into small parts is called computational thinking. हम किसी भी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं. This is called computational thinking. So my dear student, I hope you can understand that by previous example we have to divide any problem in any small pieces, in a number of pieces, and after that we have to recollect them and we rejoin them. So we have, this is how we have to find the solution of any problem. My dear students, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कंप्यूटेशनल थिंकिंग का. फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे, आई थिंक. ओके. So I'm before I continue this thing, I'm just going to tell you few more things. That are few components of computational thinking. There are various components of computational thinking. Okay, my dear students, there are various components of computational thinking. There are various components of computational thinking. What are these components? The first and the foremost important component of the computational thinking was analysis. सबसे पहला कंपोनेंट है एनालिसिस, माय डियर स्टूडेंट. तो व्हाट इज एनालिसिस? एनालिसिस is a process. It is a process to understand any problem. माय डियर स्टूडेंट, किसी भी प्रॉब्लम को समझना क्या होता है? सबसे पहला, किसी भी प्रॉब्लम को समझना, उसका जो पहला बेसिक स्टेप होता है उसको बोलता है एनालिसिस. कंप्यूटेशनल थिंकिंग में किसी भी प्रॉब्लम को समझना फर्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है एनालिसिस. एनालिसिस इज अ प्रोसेस वेयर वी हैव टू इन्वॉल्व, वेयर वी नीड टू लर्न व्हाट इज एग्जैक्टली प्रॉब्लम इज. प्रॉब्लम कहां पर है पहले इसको समझना. ओके. एंड how to get the goal. हम अपने गोल तक कैसे पहुंचेंगे, उसको अचीव करना, ये होती कंप्यूटेशनल थिंकिंग. दिस इज ऑल अबाउट कंप्यूटेशनल थिंकिंग. I'll just tell you one very interesting example so that you can easily understand this. Suppose there are 4 ways. Suppose this is you, and there are 4 ways to go any. My dear student, suppose 2 places हैं, ये प्लेस A है और ये प्लेस B है. Okay, so you have various options to go there. One option is like this.
Oh. My dear students, this is the starting point. A is the starting point. And B is the end point. Okay. There are various ways through that you can reach your goal. The first way is that you should go in that fashion. You should go to C and then go to B. One more approach is you should go to D and then reach to this B. Oh, just wait for a second. My dear student, as you can see that I have the following notes. ये चार रास्ते हैं, मुझे A से B तक पहुंचना है. A से B तक जाने के लिए तीन रास्ते मेरे पास. I have three states. मेरे पास three options हैं. We have three options. First option क्या है? पहला option number one. Option one है. Option one is हम analyze करना सीख रहे हैं बच्चों. What is analyzation? Okay. What is analyzation? My goal is to reach A to B. हमें B तक जाना है. We are starting from A. हमें B तक जाना है. तो इसको जाने के लिए हमारे पास तीन ऑप्शंस है. ऑप्शन नंबर वन क्या है? पहला ऑप्शन क्या है? We directly move A to B. हम डायरेक्टली A से B पहुंच जाए. ओके. सेकेंड ऑप्शन क्या है? सेकेंड ऑप्शन है हम पहले A से C जाएं, देन C से B जाएं. एक ऑप्शन ये है. थर्ड ऑप्शन क्या है? हम पहले A से D जाएं और फिर D से B जाए. तो माय डियर स्टूडेंट, हमें स्टार्ट A से करना है, पहुंचना B तक है. तो ये हमने एनालिसिस किया. क्या किया? एनालिसिस किया. तो जो एनालिसिस होता है प्रॉब्लम का कि और हमें पहुंचना कहां तक B तक है. तो ये मेरे पास मैंने मैंने जो गोल बनाया है A to B तक पहुंचने का, ये होता है एनालिसिस. ये क्या होता है? एनालिसिस. तो माय डियर स्टूडेंट, एनालिसिस इज द प्रोसेस टू अंडरस्टैंड एनी प्रॉब्लम एंड हाउ टू गेट द गोल. और अपने गोल तक कैसे पहुंचेंगे, ये होता है एनालिसिस. माय डियर स्टूडेंट, I hope you get the point. My dear student, my next option, you have to write down this thing if you want. The next thing is that decomposition. Next thing is decomposition. What do you mean by decomposition? What do you mean by decomposition? Decomposition. What is decomposition? Okay. Second component is decomposition. Decomposition. What is decomposition? Okay, my dear students. Okay, just hold on. Okay, my dear student. Now we are discussing about decomposition. So, my dear student, decomposition is you can say you have to divide the problem into multiple stages. You have to divide the problem in small chunks. Divide the problem. Divide the big problem
into small chunks is called decomposition. My dear students, if you have a problem, if I give you to start, if I give you to one problem and you have to divide the multiple tasks, you have to divide the problem in multiple way. You have to divide the problem into small tasks, and then you have to solve each problem at separate level. Then you can easily you can say that solve the problem. So my dear students, suppose if you want to go Mumbai to Delhi for school picnic, or you can say for holidays, holiday vacation. Suppose this is Mumbai, this is Delhi. Okay, so I just tell you how you to divide this decomposition. Okay, I'll just give you various interactive example so that you can easily understand all the things. Suppose this is Delhi, this is Delhi, this is Mumbai. This is Mumbai. Okay, so I just want to go Delhi to Mumbai for school vacation. Okay, my plan is to go Delhi to Mumbai vacations. Okay, so first of all, what is our problem? Our problem is we have to go Delhi to Mumbai. So we need to decompose the problem. How we can go to Delhi to Mumbai? So we have to divide this plan into small chunks. So what are the small chunks that are? We have to first decide which flight we will take. हम कौन सी flight लेंगे? और which train we will option or which train we will going to opt. हम कौन सी ट्रेन लेंगे या कौन सी किसके थ्रू जाएंगे? We have to decide. Okay, which train or Airbus we prefer. Okay, second problem is we have to decompose this problem. Book the tickets. Second problem is book a tickets. Ticket book करना second problem है. Book a ticket. Third problem is pack the bags according to the Mumbai condition, weather condition. Pack the bags. So this is how we have to prepare the to-do list. जो हमें काम करना है उनको पहले लिस्ट बना लेते हैं. ओके, हमें इनको काम को पहले टिक आउट करना है. ठीक है, इसके अलावा we can say that these are the I'll just give you very few examples. You can make further new list, and you also book the hotels where you can stay. आपको होटल भी बुक करना पड़ेगा जहाँ आपको स्टे करना मुंबई में. तो book the hotel and cab. जो गाड़ी से आप जाएंगे होटल तक वो कैब भी बुक करनी पड़ेगी. ओके, तो ये सारे टास्क हो गए आपके दिल्ली से मुंबई जाने के. तो मैंने देखिए एक प्रॉब्लम थी दिल्ली से मुंबई जाना, उसको किसने मल्टीपल टास्क में तोड़ दिया. यानी कि अगर जैसे मेरी टिकट कंप्लीट हो जाएगी, जैसे मेरी टिकट बुक हो जाएगी मैं इसको टिक कर दूंगा. जैसे मेरी टिकट बुक हो जाएगी मैं इसको टिक कर दूंगा. सिमिलरली जैसे मेरे बैग पैक्स हो जाएंगे मैं इसको टिक कर दूंगा, और जैसे मेरे होटल और कैब बुक हो जाएगी मैं उसको पहले टिक कर दूंगा. इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन. माय डियर स्टूडेंट, यू हैव टू गेट दिस पॉइंट वेरी वेल. आई थिंक अभी भी कोई प्रॉब्लम मुझसे पूछ सकते हैं. थर्ड इज पैटर्न रिकॉग्निशन.
The third is pattern recognition. What is pattern recognition? Third is pattern. My dear students, the pattern recognition is a process. The pattern recognition is a trend, is a pattern, it is a trend which is a trend or observation through we can resolve any problem. My dear student, pattern recognition is a trend or observation through that we can resolve any problem. So we have to decide the pattern. So that we have to decide which we have to follow. Okay. Suppose, my dear student, we have to observe that we are going in the month of April. We are going to in the month of April. Suppose we are going to Mumbai in the month of April, and you know that the weather condition of the Mumbai was hot in the month of April. So we are going to Mumbai in the month of April. So we need to understand that Mumbai is generally hot. Mumbai is generally hot and humid in the month of April. But obviously, my dear student, you have to get this information from internet. आपने इंटरनेट से चेक कर लिया, जैसे मैं अभी चेक कर लेता हूँ मुंबई का वेदर टेम्परेचर कितना, मैं अभी शेयर करता हूँ आपसे स्क्रीन. ओके 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 यस ओके, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड. आपसे स्क्रीन शेयर करता हूँ. टेम्परेचर ऑफ वेदर ऑफ मुंबई. As you can see that I have easily see the temperature of Mumbai, which is 29 degree, which is relatively hot. So my dear student, we have to understand the pattern that the Mumbai is generally very hot in you can say that in month of April. So the pattern recognition is belonging to the understanding and what kind of situation we have to face in Mumbai. This is called pattern recognition. हमें मुंबई में क्या क्या कंडीशन मिल सकती है, कैसा टेम्परेचर मिल सकता है, कैसा कैसा कन्विंस मिल सकता है कि मुझे वहां पे ट्रेन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मुझे मतलब वहां पे प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी. ये सब चीजें हम लोग पहले पता कर लेते हैं ताकि हमको वहां पे प्रॉब्लम ना हो. This is called pattern recognition. The fourth thing is abstraction. The fourth is abstraction. Fourth is abstraction. It is a process of filtering out. It is a process of filtering out the problem. आपको प्रॉब्लम को और फिल्टर कर देता है वो, इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन. ओके, यानी कि प्रॉब्लम को और इजी डिकम्पोज कर देता है. सपोज माय डियर स्टूडेंट, आप दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं, दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं और आपको एक ऑप्शन मिलता है. आपको ऑप्शन ये मिलता है कि आपका कोई फ्रेंड है जो मुंबई में ही रहता है. तो अगर आपका फ्रेंड मुंबई में रहता है तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कॉल योर फ्रेंड दैट आई एम कमिंग in that particular date. I am coming in 10th of April. So my dear student, my dear, you come to station and receive me, and I will stay for 5 days in your house.
तो इस तरीके से आपने एक प्रॉब्लम का एब्स्ट्रैक्ट सोल्यूशन निकाल दिया। एब्स्ट्रैक्ट सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ, कोई ऐसा काम करना जिससे आपके और पैसे बच गए, यानी कि आपको होटल का और कैब का किराया बच गया आपका, ठीक है, और खाने का भी बच गया, आप दोस्त के घर में खा लेंगे। तो इस तरीके से you have to easily you can say that thought the process, and you have to so you can say that you have to make the plan even more cheaper। अब आपके और कम पैसे खर्च होंगे क्योंकि आप अपने दोस्त के घर में रुकेंगे, आपको होटल में नहीं रुकना पड़ेगा, आपको कैब खर्चा नहीं करना पड़ेगा, आपको खाना के में पैसे नहीं खर्च पड़ेंगे। तो इस तरीके की थिंकिंग को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। माय डियर स्टूडेंट, आई होप यू कैन गेट द पॉइंट, एंड this is how we have to and the last is algorithm। My dear student, algorithm मैं आपको कल बताऊंगा, tomorrow I will talk about this algorithm। I hope you have to understand this point, and if you face any difficulty to learn understand this, then let me inform। My dear student, you can watch the video again, and if you have any problem you can ask। Thank you।